Good evening to all of you. Is this audible, visible, all clear? Is this audible, visible, all clear? What a minute. No, clear, clear. Sorry, just 1 minute interruption. Just clear. Rudra, Girija, everyone joined. Okay. So, कौन कहूली मु जीएस पेपर 4 आसी सारी आम पाक बर्तमान आम जीएस पेपर 4 ऊपर डिस्कशन करिया देखिया को टाइप रो क्वेश्चन आछ समस्त देखिचंदी क्वेश्चन देखिचंदी समस्त देखिछ रुद्र गिरिजा एवरीवन समस्त देखिचंदी देखिचंदी समस्त कोई को टाइप रो क्वेश्चन आसी देखिचंदी ना देखिचंदी हां यस और नो क्विक क्विक जल्दी जल्दी कोन तापर आगु जिवा just 1 second oh हो ठीक है क्वेश्चन को आसीबा को टाइप रो क्वेश्चन अछि आई एक्सपेक्ट समस्त क्वेश्चन देखिचंदी आ बुझिचंदी मध्य जहा जा अछि गुड मिनिट just 1 second मु देखै दउ छै क्वेश्चन just 1 second हाँ देखो क्वेश्चन देख पारछन समस्त क्वेश्चन देख पारछन को टाइप रो क्वेश्चन अछि कहूची owing to paucity of time a university professor generates a PhD evaluation report using artificial intelligence
कौन कहूँ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर जन पीएचडी प्रोफेसर गोटे रिपोर्ट बनई हाउ फार इट इज जस्टिफाइबल बा how far it is ethical. So accountability integrity upare question. The business house is working on a project that could displace a forest community from their habitat. As the administrative officer of that district, what ethical challenge are you likely to face? Business house is working on a project that could displace a forest community from their habitat. What a forest community, you can implement FRA, Forest Rights Act here. पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट या ऊपर आपण हेटी डिस्कशन करि परिबे. So this is an ethical question on the marginalized community, habitat of marginalized community. An endangered tribe has developed a severe skeletal deformity. University research कहूची कि mineral supplement as a possible remedy. Though clinical trials are yet to be conducted, should a district magistrate use this search on the tribe? Clinical trial हेनी से को जदि क्लिनिक जो मेडिसिन कथा कहूचे मेडिसिन को आपण यूज न करू से ट्राइब मरि जीवो. हेटी क्वेश्चन होची से क्लिनिकल ट्रायल हेनु तो ड्रग को आपण ह्यूमन ऊपर गोटे मनीष ऊपर यूज करिया पे अलाउ करिवे ना करिवे नाही. दैट इज द क्वेश्चन. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हिसाब रे डिस्कस हाउ नेशनल सिक्योरिटी कैन बी बैलेंस्ड विथ कंसर्न्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. National security, very important and very practical question. You can see, discuss how national security can be balanced with human rights. Now एटी को context एटा पचरा दिछि आपण क्वेश्चन जानि परछन्ती तो context कोन बुझि परछन्ती जेतो रेफ्यूजी माने आछन्ती बाहर. Let's talk about Rohingya Muslims. Let's talk about other types of migrants, those who are coming to India. Migrant माने तो इंडिया को आछन्ती ये क्वेश्चन कहूची होची ता सहित आपण बैलेंस केमति करिवे ह्यूमन राइट्स को ता सहित अपन ह्यूमन राइट्स को केमती बैलेंस करिवे हैला. डॉक्टर बी आर आंबेडकर हैड cautioned that employing civil disobedience within a constitutional democracy equates to endorsing anarchy. How should modern democracies navigate the ethical dilemma posed by civil disobedience movement which aims to promote social justice? In what ways can an Indian administrative officer apply Gandhian notion of trusteeship to ensure fairness in governance? एटा मु एथिक्स रो यदि क्लास कथा देखिए गांधी's idea of trusteeship I have completely discussed. What is Gandhian idea of trusteeship? ता ऊपर क्वेश्चन कला. Shakespeare कहले the arms are fair when the intent of bearing them is just. So with ethical implication does this have in governance? यार ethical implication कौन governance ऊपर है? Citing the serious adverse effects of long-term medication, doctor convinces the family of a female patient for surgery. This led to patient to reluctantly consent for the surgery, though her original choice was to opt for medication. Explain the concept of paternalism beneficence by analyzing the doctor's action. Efficiency is doing things right while effectiveness is doing the right thing. How do you strike balance between these two to enhance productivity? Schools working in remote areas don't fully comply with government regulations. If the rules are enforced, it will lead to most of the schools closing down. तो आपण एई जगह रे कोन एथिकल कंसर्न नेबे स्कूल बंद करिवे ना करिवे नहीं. इंटरनेशनल रिलेशन ने एथिकल कंसीडरेशंस आर ऑफन subjugated to the strategic interest of nation states. Discuss ethical perspective. Some moral philosophers argue spending some of your resources without significantly affecting your financial stability to help other people who badly suffer is our moral duty and not merely a matter of charity. Justify this claim by explaining distinction between duty and charity. What is duty and what is charity? बुझिला तले एबे जति क्वेश्चन हम देखिलेन तापर ये देला कोन केस स्टडी देला एडी तापर देखन सेक्शन भी पूरा केस स्टडी देला मु आंसर को आसीबी तापर रोड कभी हाउ आर यू फाइंडिंग दिस क्वेश्चंस. ए क्वेश्चन जोडा देखिले आपण केमिति लागुची मते कोन ए क्वेश्चन. हाउ आर यू फाइंडिंग दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को टाइप रो लागुची आपण कष्ट लागुची सहज लागुची केमिति लागुची क्वेश्चन. क्वेश्चन स्टैंडर्ड कोन क्वेश्चन नेचर कोन पैटर्न कोन प्रथम कथा क्वेश्चन पैटर्न कोन बा नेचर कोन मते कोन कथा बुझिउची कि नहीं. क्वेश्चन नेचर कोन को टाइप रो ये क्वेश्चन पड़ी एनी आंसर. डिफिकल्ट नॉट डिफिकल्ट केमितिया गिरिजा रुद्र सिलु नी आंसर
जदि देखिए आम क्वेश्चन एथिक्स तो आज यूजुअल एनालिटिकल आसीबो यदि आम देखिए एथिक्स आज यूजुअल एनालिटिकल आसीबो बट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तो नहीं जेमति हमको लगे एथिक्स बहुत कष्ट पचार दबो आंसर करि परिबानी सेमति तो पचारु सेमति पचारछि कि आंसर कहीं दोना सेमति पचारनी मु आंसर डिस्कस करछि सो दैट जानि परिबे फर्स्ट क्वेश्चन को आसीबा एआई जनरेटेड पीएचडी रिपोर्ट जनरेटेड बाय अ प्रोफेसर इंटीग्रिटी वायोलेशन कि नहीं इंटीग्रिटी वायोलेट कला देयर इज अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट ऊपर आपण लिखिबे अकाउंटेबिलिटी रहिलानी आ सॉल्यूशन कोन लिखिबे एती पॉइंट सो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी नहीं इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट ड्यूटी टू द स्कॉलर्स कोन रहिबा दरकार डिस्क्लोजर एंड रिक्यूजल लिखिबे इंस्टीट्यूशनल एआई गाइडलाइंस की एती की एआई कंडीशन ने एआई को यूज करिवे एई कंडीशन ने एआई को यूज करिवे नहीं एई पॉइंट को फोकस करी आपण को आंसर लिखिवार अछि देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी एटी कोन लिखिबे आपण कोन लिखिबे ड्यूटी वर्सेस यूटिलिटेरियन अप्रोच कहितली यूटिलिटेरियन वर्सेस डिओंटोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट राइट एंड एनवायरमेंटल जस्टिस हैला प्रोपोर्शनैलिटी एंड रिहैबिलिटेशन ऊपर लिखिबे एई पॉइंट को लिखिबे किछि किछि लिखिया ओ लागु छि गिरि जाचा किछि किछि नै सब गुडा का अपन लिखि परिबे बट यू हैव टू ट्राई यदि आगुरु एथिक्स लिखिथिबे मु जो क्वेश्चन आंसर देइछि करैछि सेडा यदि करिथिबे त लिखि परिबे किछि असुविधा हो यूजिंग अनटेस्टेड मिनरल सप्लीमेंट ऑन एंडेंजर्ड ट्राइब कोन कहू अनटेस्टेड मिनरल सप्लीमेंट ऑन एंडेंजर्ड ट्राइब कोन करिवे एटी टेस्ट हेइनी त करिवे ना करिवेनी नॉन मैलेफिसेंस एंड सेफ्टी कथा देखिबे इनफॉर्म्ड कंसेंट देखिबे तार कंसेंट अछि कि नै रूल ऑफ लॉ वर्सेस पैटर्नलिज्म देखिबे ड्यूटी ऑफ केयर देखिबे एई सब पॉइंट को आपन को ध्यान देबा पड़ियो एई सब पॉइंट को ध्यान देबा पड़ियो बुझिले नै को पॉइंट लिखिबे जानि परछन कि नै बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विथ ह्यूमन राइट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स एठी कोन करिवे what comes first national security comes first or human rights comes first जदि कहि national security then nation is for humans जदि कहि human rights then what about others so एटा ही होच ethical dilemma this is the ethical dilemma you have to deal with so you have to balance you have to take a key balancing mechanism principle of proportionality restrictive measures on नहीं परियो judicial oversight due process राइट्स कंप्लेन फ्रेमवर्क रूल ऑफ लॉ को एठी केमती यूटिलाइज करो एई पॉइंट ऊपर ध्यान दे आपन को लिखिया पड़ो देन आंबेडकर्स कशन ऑन सिविल डिसोबीडियंस इन मॉडर्न डेमोक्रेसी एठी आपन को फिलोसोफर मान को पढिया पड़ो गांधी को पढिया पड़ो आंबेडकर को पढिया पड़ो तेबे जाय आंसर करि परियो अदरवाइज आंसर करि परियो तले एठी कोन लिखिबे आंबेडकर्स कॉन्टेक्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विथ इंस्टीट्यूशनल रेमेडीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स subvert the rule of law modern dilemma कौन balancing democratic dissent हैला institutional channel first non violent resistance ऊपर लिख परिवे हैला तो आंबेड सिंपल देखो ये केते टेक्निकली क्वेश्चन पदेला आंबेडकर को आइडिया को यूज करियो कोची कहा ऊपर ना गांधीयन प्रिंसिपल ऊपर देन पताला गांधीयन कांसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप मोटा पढै छी क्लास रे ethical stewardship तार अर्थ मैनेजिंग पब्लिक फंड with utmost care you have to manage the public fund when you are in a public position हैला इक्विटी एंड अंतोदया ये जिंस देखिया पड़ो सेल्फलेस सर्विस मिनिमाइजिंग ब्यूरोक्रेटिक एलाइटिज्म हैला then the arms are fair when the intent of bearing them is just arms are fair एटी कोन लिखिबे यदि माने आर्म्स एम्युनिशन धरछन बट फेयर जस्ट इंटेंशन अछि ताले ठीक अछि ताले कोन लिखिबे प्रोपोर्शनैलिटी इन एनफोर्समेंट स्ट्रेटेजिक चॉइस मुके भी पुलिस मन इच्छा आपण एग्जांपल देबे पेलेट गन्स जो यूज करा जाउची मेनी विक्टिम्स ऑफ पेलेट गन अप्लाई एप्लीकेशन they have lost their complete eyesight 99% eyesight vision loss है चीज मान का so when police is using any arms police should be accountable for this so there is a strict instruction for use of pellet guns it should be used below the knee आंठू तळु को यूज होवा दरकार आंठू ऊपर को आपण व्यवहार करि पारिबे नाही बुझि पड़तनी ना नहीं बुझि पड़तनी एल कोन लिखिबे प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज
मोराल अकाउंटेबिलिटी रहा दरकार कि आउ कार जीवन नष्ट हो जिवो जदि मु कोनस प्रकार मिसयूज करूची देन डॉक्टर्स एक्शन पैटर्नलिज्म बेनिफिशंस चले को कहा पे लिखियो एनालिसिस ऑफ एक्शन केमिति डॉक्टर बाईपास करची पेशेंट्स इंडिविजुअल प्रेफरेंस पैटर्नलिज्म ओवरराइडिंग पेशेंट्स ऑटोनोमस डिसीजन पैटर्नलिज्म पेशेंट कथा न सुनिकी ताको हमें ओवरराइड करूची कि डॉक्टर जो हिसाब रे लीड करूची से हिसाब रे काम कला ethical obligation to act for patients well being beneficence so while the doctor aim for medical beneficence ethical balance beneficence must be balanced with patient autonomy through shared non coercive decision making ए पॉइंट को ध्यान दे अपन लिखियो नेक्स्ट balancing efficiency and effectiveness now what is efficiency and what is effectiveness efficiency means doing things right resource waste करिबेनी effectiveness means achieving long term organizational goal achieving long term organizational goal that is effectiveness so दीटा केमती बैलेंस करा जो ता ऊपर क्वेश्चन अपन लिखिबे efficiency without effectiveness ले कोन हो effectiveness without efficiency ले कोन हो कहा ऊपर इंपैक्ट पड़िबो ताको डिस्क्राइब करिबो हैला देन रिलीजियस सॉरी रेगुलेशंस वर्सेस एजुकेशनल राइट्स इन रिमोट स्कूल्स एटा कहली टिका आगर जदि रूल रेगुलेशन मानिबे ताले स्कूल बंद हो ताले आपण कोन करियो मते कोन एज एन ऑफिसर जदि रूल रेगुलेशन मानिबे ताले स्कूल बंद हो ताले आपण कोन करियो स्कूल बंद करैबे स्कूल खोला करैबे कोन करिवे वेरी गुड इवनिंग नारायण जीएस 4 डिस्कस करछ हमें यूपीएससी परीक्षा जो आज हेछि तार पेपर सो इट इज अ प्रैग्मेटिक फ्लेक्सिबिलिटी सब्सटेंस ओवर फॉर्म डॉक्ट्रिन tolerate non-critical procedural lapses then compliance state support provides targeted financial and infrastructural assistance state support ये point लिखिए then strategic interest versus ethical consideration in international relation strategic interest versus ethical consideration in international relation एटी कौन लिखिए एथिक रियल पॉलिटिक केमिति इंपैक्ट पकोउची नेशनल सिक्योरिटी ऊपर क्रिटिक ऑफ प्योर रियलिज्म एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट ऊपर लिखियो एटी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड कोन दरकार लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड ए पॉइंट को आंसर करके 5 नंबर क्वेश्चन आंसर लिखियो देन एम्पैथी वर्सेस कंप्लायंस कैंसलिंग टीचर्स ट्रांसफर एम्पैथी वर्सेस कंप्लायंस एटी कोन लिखियो एम्पैथेटिक एस्पेक्ट लिखिबे पर्सनल हार्डशिप ऑफ स्टाफ मेंबर कंप्लायंस एस्पेक्ट ऊपर एठी लिखिबे एथिकल ब्रीच केमिति होची लिखिबे एई पॉइंट को ध्यान दे लिखिबे आर्बिट्ररी ट्रांसफर को यू शुड रिवोक आर्बिट्ररी ट्रांसफर देन ड्यूटी वर्सेस चैरिटी इन स्पेंडिंग रिसोर्स फॉर वल्नरेबल नाउ व्हाट इज ड्यूटी एंड व्हाट इज चैरिटी कोन ऑप्शनल एक्ट ऑफ मर्सी praised when performed but not morally condemned if omitted जदि 10 टका मागुची गोटे भिखारी ताको देलनी ए किछि कहबेनी काई देलोनी बट देई देले तो प्रशंसा भी हे पारे कि हम भलो कामटे कले फॉर चैरिटी ड्यूटी इज ऑब्लिगेशन न कले लोक कहबारे कलानी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस इज ड्यूटी सो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी सफरिंग क्रिएट अ मोरल ड्यूटी ऑफ असिस्टेंस अपन एटी यूज करि पारिबे ये गला सेक्शन ए रो क्वेश्चन सेक्शन बी रे से कंप्लीटली केस स्टडीज पचारि छि एटी केस स्टडी मानको को आपन को डिस्कस करिया को पड़िबो कोन केस स्टडी डिस्कस करिवे मेडिकल इमरजेंसी हिस्टेरेक्टोमी विदाउट डायरेक्ट पेशेंट कंसेंट एथिकल इशू कोन ना ऑटोनॉमी वर्सेस पैटर्नलिज्म सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑटोनॉमी माने पेशेंट रो चॉइस की मते ई ट्रीटमेंट करा जाऊ ना आपन ताको ओवरराइड करचोंदी कि नाही तते ई ट्रीटमेंट तो जबरदस्ती करे दे पेशेंट रो कंसेंट इज इंपोर्टेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिमिट communication breakdown so what is the moral conduct of doctor na good faith procedural flaw ये सब पॉइंट ऊपर आपण लिखिया पड़ियो देन एआई ड्रिवन प्रेडिक्टिव पोलिसिंग इन हाई रिस्क नेबरहुड एथिकल इशू कोन ना डाटा बायस रीइंफोर्समेंट प्राइवेसी सर्विलेंस प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हैला प्रेडिक्टिव प्रोफाइलिंग माने आपण देखु जने साइड लोक कोन करछि हेटा पर से भलो लोक होइतिबो आपण ताको मिछरे जज करछन हैला
ये सब केस स्टडी अच्छे केस स्टडी मुझे देइछि कोन करि परिबे एआई सिस्टम को कंप्लीटली स्क्रैप करि परिबे ऑपरेशन कंटिन्यू करि परिबे सब जिंस लिखि परिबे आपण लैंड यूज चैलेंज चेंज ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एथिकल इश्यू कोन सिस्टमैटिक करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऊपर क्वेश्चन आसीबट इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऊपर क्वेश्चन ए सब पॉइंट ऊपर आपण लिखि परिबे देन बायोमेट्रिक वेलफेयर एक्सक्लूजन इन रिमोट पीडीएस डिलीवरी बायोमेट्रिक वेलफेयर एक्सक्लूजन ऑप्शन कौन स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक कंप्लायंस करि परिबे अनचेक्ड डिस्ट्रीब्यूटर डिस्क्रिप्शन करि परिबे मु खाली पॉइंट कहूँ आपण पढ़िला पर क्वेश्चन जानि परिबे जो स्टोरीटा देइछि कि आपण एई सिचुएशन में कोन करिवे कोन नै केस स्टडीटा को देखिला पर जानि परिबे मु खाली कहूँ को पॉइंट को फोकस कर लिखि परिबे एथिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेलफेयर गेटकीपर 11 नंबर क्वेश्चन देइछि एथिक्स एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्प्रोमाइज न्यूट्रलिटी इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नाउ वेरी इंपोर्टेंट एथिकल इश्यू कोन लॉस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वर्सेस ऑर्डर बैलेंसिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन थ्रेट गोटे क्वेश्चन आम जीएस 3 आज करथिले लद्दाख ऊपर डिस्कस करथिले लद्दाख रे जो बॉर्डर प्रोग्राम गुडाक आसु सब लद्दाख ऊपर डिस्कस करथिले ना बॉर्डर प्रोग्राम गुडाक आसुनी कि केमि बॉर्डर एरिया ऊपर इंपैक्ट पकोच केमिति बॉर्डर एरिया ऊपर इंपैक्ट पकोच 2027 ऑप्शनल ओपीएससी पई फाउंडेशन बैच चली 27 पे आसी गलानी बैच बहुत बैच देखि पारिबो यू कैन चेक आउट इन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन हला स्ट्रेटेजिक आर्म सेल्स कंट्री ए वर्सेस कंट्री बी कौन ये करें मुझे डिसीजन ऊपर दे देखिए निजे निजे पढ़ी जानी पारे को पॉइंट को आम स्ट्रेटेजिक आर्म सेल करें कौन बुझिला आम क्वेश्चन आम तो डिटेल आंसर डिस्कस करने आम जस्ट खाली ट्रेंड देखुचे पैटर्न देखुचे कि कौन फास्ट रिएक्शन देखुचे कौन टाइप रो क्वेश्चन पड़ी तो ये देख पारे समस्त सेक्शन बी रे से तुमको पूरा केस स्टडी देदेला सेक्शन बी तुमको पूरा केस स्टडी देदेला हैला कौन करिवो कौन नहीं पूरा केस स्टडी देदेला तो केस स्टडी पढ़ाटा तुम बहुत इंपोर्टेंट हो गला सो प्लीज रीड केस स्टडी सॉल्व करबा आरंभ कर दियंतु ओपीएससी रे मध्ये आपण एवढा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि परिबे इन ओपीएससी आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैला तले कोन लागु छे कोन व्हाट इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल इन यूपीएससी प्रति आपण कॉन्फिडेंस लेवल कोन कहू यूपीएससी प्रति आपण कॉन्फिडेंस लेवल कोन कहू मते कोन कौन कहूँ हम परिश्रम कले हम एमती ना कि बहुत डिफिकल्ट आसी ऑल ऑफ यू आर वेरी मैच्योर्ड ऑल ऑफ यू आर वेरी रिलीजियस एंड जुडिशियस तेणु आप करें व्हाट आई एक्सपेक्ट हम ना हमनी हम ओके ठीक अच्छे लेट्स वाइंड अप दिस सेशन पुणी आम देखा नेक्स्ट क्लास रे आउ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आनी आसे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू कौन पचार तो मेन्स रे ठीक है ओके ठीक है थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन